Imagine you are going to the Himalayas with no money, only to live with the mercy of the locals. And guess what? We did exactly that. Lahu Spiti. This is the story of my greatest adventure. It was 13 December 2023. My final exam just finished. If you know me, you know I had to pull out the frustration somewhere. And this time, it will be the Spiti Valley. Unfortunately, we missed the direct bus and we had to go via Shimla. এমনি ধরেছেন ওকে তো এখন রাত 1টা বাজে এমন একটা অবস্থা ভার্সিটি থেকে যখন বের হয়েছিলাম তখন এটিএম বুথে কাজ চলতেছিল এদিকে আসছে একটা ইন্টারন্যাশনাল এটিএম বুথ মানে ইন্টারন্যাশনাল কার্ড অ্যাকসেপ্ট করে না এসবিআই করতো এখন এসবিআই এটিএম বুথ এক্সপায়ার টান দিয়েছি এটিএম বুথ বাইরে হিসাব করছে Is it just me or you also think like the lights look like stars in the horizon? Anyway, we reached Rampur nearly during the dawn and it was the first time the temperature dropped below the freezing point. Immediately after the sunrise, we began to realize what a beautiful place we are in. The sun rays that were shining at the top of the mountain peaks, it was giving the feeling that the mountain tops are made of gold. We reached the district headquarters Reckong Peo at 11:30. তো আমাদের রিকং পিও পৌঁছানোর কথা ছিল 9টা বাজে বাট একে তো আমরা বাস মিস করছি সো 3বারে ঘুরে আসতে হয়েছে তার উপর দিয়ে আমরা আসছি 11:30টার দিকে আসার পর যখন কাজা যাওয়ার যে পারমিশন নেওয়ার যে ইনার পারমিট অফিস আছে সেটাও আজকে বন্ধ কোনো এক কারণে রিকং পিও ইট ইজ দ্য ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার অফ কিন্নর ভ্যালি a small town surrounded by mountains all around. And sometimes during the winter, the snow covers everything and the whole town becomes a white marble. For the paperwork that we had to do tomorrow, we had to stay the night here. Our friend Rohan arranged us this beautiful accommodation. Next morning, after waking up, we had to eat something because we are damn hungry. So we went to this beautiful restaurant. So we are basically eating here. The best thing about this town is you can get these stunning views everywhere. Wherever you look, there will be mountains for sure. After
After eating, we had to go to the DC office for inner out permit, and the process was fairly easy. The officials were pretty friendly, and one of them also took us to the bus stand and where we picked the bus for our next stop, which is Pooh. Like always in the Himalayas, the journey didn't disappoint us. Also, it was here where we saw our sunset. We have seen some waterfalls along our way, or what should I call it, I don't know. We reached Pooh early at night, and like last time we were offered a beautiful place to stay. The only bad thing was it was -11 at night, so it was pretty cold for us. At the morning, one of the officials dropped us to the main road from where we had to hitchhike the rest of the way. Nako कितना दूर है यहाँ से? After a fairly long wait, we found somebody and they took us to Nako. The strange thing was, as we were going forward, the lush green mountains were becoming desert slowly. But don't get me wrong, the desert were pretty cold. लोगों का लेट हो जाएगा ना? These guys dropped us at Nako, and from there we had to go to Kaza. From here we were offered a ride by this beautiful family. They're also traveling like me, but as a family. And they were pretty chill guys, and especially this uncle. Yes. We had so much fun in this movie. We were talking, singing, knowing about each other's lifestyle, and also dancing together with the flow, and the scenery was also beautiful. It was beyond anything we could expect at this moment. A question for all of you. Do you think the mountain songs have some symmetry in them? Because wherever I go in the mountains, when I see the song, it feels like it belongs here in the mountains. We're passing by mountains, so many parallels, there was no one. But every now and then there was this small village and some small amount of people.
And guess what? This family also managed us a stay in Kaza. The view of the stay was beautiful, but one thing was the problem, the temperature. Even the drinking water was frozen, and obviously there was no tap water because all of them are frozen anyway. So it's basically 3 a.m. at night, and the temperature is minus 19 degrees, but feel like temperature it's around like minus 25 degrees. So this is basically my room, and this is a view from my window, and this is the view from my balcony. It's still minus 14 degrees here. Next day we headed towards Hikkim. This is called the world's highest post office. As usual, we started walking, looking for a ride. We had to walk a long way. After that, we found a shopkeeper that works in the Hikkim. And for the rest of the journey to Hikkim, he was our companion. সামনের ভিডিও করি As this was the highest post office of the world, obviously we had to write something for our family and friends. So we did that. The interesting part was when I took off my gloves, my hands started freezing. It was damn cold. And there was this wind coming. My hand was about to get frostbite. Maybe after seeing the lights you might think it wasn't that cold after all, but truly it was like minus 10 degree or something like that. After riding and submitting and all, we had to go for our homestay. On our back we also had to hitchhike because basically there was no public transport. And this time was we were walking and walking. There was no sign of life along our way. Not even a dog, not even a tree, no man, nothing. And finally, after hours, we find someone, and he was maybe an army person. On our way back, we saw these beautiful deers. These are called Musk deers. It is a unique species. They are indigenous to the Himalayas and they are pretty rare. We didn't realize until we saw a documentary about it. The next morning was set for our start destination, the place we had been waiting for days.
As usual with the hitchhiking phenomena, we had to wait a lot, and then we found this father with the schoolgirl. He was very happy to take us in. Mostly we left for the school of that girl, and I tell you, these kids were so cute. I'm not your teacher. I'm just a visitor here. Okay, you guys look so cute. Yes, everyone. It was now when our dream was feasible to us. Thousands of kilometers, extreme temperatures, extreme height, lack of oxygen, and everything we have endured. And the Key Monastery was in front of us, waiting to be explored. Although we had some stairs to climb, but it was well worth it. On our way to the peak, we have seen so many monks, and some of them were playing cricket. Interestingly, we saw the match. And at the end, we took an interview of a monk. He was very happy to tell us about the place. Can you say more about the place and when it was established and what kind of things you guys do? Okay. You can speak it for me. Yeah, thank you. It's good for me. तो आप दोनों बहुत दूर से बांग्लादेश से है ना, तो इस मंदिर की स्थापना जैसे कि यहाँ पर 3 ऐसे मंदिर हैं, ओल्डेस्ट टेम्पल, ओल्ड टेम्पल और न्यू टेम्पल। तो ओल्डेस्ट टेम्पल की स्थापना 10th सेंचुरी से पहले हो चुकी है। 10th century से पहले, बिफोर 10th सेंचुरी, उनके जो स्थापना करने वाले जो गुरु थे वो है तिब्बत से ही, फ्रॉम तिब्बत, पर वो तिब्बत से आते थे पढ़ाई करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो उनके जो टीचर हैं उस दौर में, तो वो उस वक्त अतिशय तिरुमकरा जी। Yeah, yes. You know, I belong to that district where Tirumakkar used to live. I belong, my hometown is Vikrampur, you know? Yes. It's the birthplace of Tirumakkar. Right. So, वो अतिशय तिरुमकरा जी गौतम जी के टीचर हुआ करते उस दौर में नालंदा यूनिवर्सिटी। So he is the second most important religious figure. Yes, of course, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अतिशय तिरुमकरा जी और उनसे शिक्षा करने, जैसे हमारे इंडियन के 12 विद्वान है ना, अतिशय तिरुमकरा जी हो गए, आचार्य शांतिरक्षित जी हो गए, आर्यदेव जी हो गए, नागार्जुना जी हो गए, है ना, असंग हो गए। तो इस तरह के 12 हमारे जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, तो वो सारे यहाँ भारत के जो बिहार में जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ पर पढ़ाई करने वहाँ तिब्बत से आते थे। तो ये उस दौर में उनका ये एक रूट था ऐसा कर दिया। जैसे आप लोग आए बांग्लादेश से आएंगे, तो बांग्लादेश से दिल्ली, दिल्ली से शिमला, शिमला से ऐसा फिर स्पीति आए हुए ना। उस दौर में फिर वो लोग तिब्बत से यहाँ स्पीति, फिर किन्नौर, फिर ये जम्मू होते हुए बिहार जाया करते थे। तो उस दौर में यहाँ पर सिर्फ ओनली माउंटेन ही थे, और इस माउंटेन में बहुत सारे गुफाएं थे, केव्स थे। तो वो यहाँ पर आके साधना किया करते थे। तो उस दौर में उन्होंने जैसे मणिलाखंग, नाको कुजुम और गोमटूखांग, इन तीनों की स्थापना उस वक्त की थी। हालांकि की मोनास्ट्री की जो स्थापना करने वाले जो गुरु हैं वो द ग्रेट ट्रांसलेटर रिंजन सांबो जी, उनका भी 19वें अवतार चला हुआ है। तो उस वक्त उन्होंने, जब रिंजन सांबो जी 6वें अवतार में थे, उन्होंने 108 के मंदिर की स्थापना एक साथ की थी, वो भी एक रात में की थी। जिसमें की मोनास्ट्री है, ताबो है, नलुंग है, नाको, रिबा, रामसंग, लद्दाख में आई थी।
बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी स्थापना एक साथ हुई थी। उस वक्त की मोनास्ट्री जो था, जो लोकेशन था, वो यहाँ नहीं हुआ करते थे, वो हुआ करते हमारे यहाँ से आगे जाके गाँव आते रंगरेक विलेज, तो वहाँ से थोड़ा आगे होट के वहाँ हुआ करते थे उस वक्त की मोनास्ट्री। और जैसे ऊपर कॉग्निक में जो मोनास्ट्री है, वो तो सब साथ में हुआ करते थे उस वक्त। फिर ऐसा किसी कारण वहाँ पर अटैक हुआ था, डिस्ट्रॉय होने के बाद 14th सेंचुरी में उस मंदिर को यहाँ शिफ्ट किया गया। टॉप में दो जो फ्लोर है, वो की जो ऊपर की दो फ्लोर है, वो वहाँ से शिफ्ट किया गया 14th सेंचुरी में। तो ऊपर के जितने सारे मुझे सांपोजी ने जो मंदिर यहाँ बनाए हैं, ये लगभग अभी वैसे तो 1000 साल पुराने हो चुके हैं उनके, जो जैसे काबू मोनास्ट्री हो गए, लालुंग हो गए, ये सारे 1000 साल पुराने वाले हैं। की मोनास्ट्री थोड़ा पीछे रह गई क्योंकि वहाँ शिफ्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद शिफ्ट किया गया था। लगभग 600 साल ज़्यादा हो चुके हैं। जो नीचे के जो मंदिर है, जो ओल्डेस्ट टेम्पल है, ये 1000 साल पुराने वाले ही है, ठीक है ना। और हमारे पीछे जो मंदिर है, द न्यू प्रेयर हॉल, इसको बने हुए 23 साल हो चुके हैं। यानी कि सन 2000 में इस मंदिर की क्या बोलते कि इनोग्रेशन बोलते हैं ना, उद्घाटन हुआ था महामहिम दलाई लामा जी के द्वारा, द ग्रेट 14 दलाई लामा जी। तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने इस मंदिर की जिसे शुद्धिकरण किया और यहाँ पर कांच का टीचिंग भी दिया गया था उस वक्त। And like, how is life in monastery? What kind of things and prayers you just do? मोनास्ट्री की लाइफ देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पर हम जब उसके अंदर जाएंगे तो काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज होंगे। पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे बुजुर्ग मंक हैं, यंग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो उन सभी का जो शेड्यूल टाइम है वो थोड़ा अलग है। जैसे मैक्सिमम सुबह मॉर्निंग जो प्रेयर होती है यहाँ पे, उसमें सारे आते हैं और प्रेयर्स करके एज अ ब्रेकफास्ट करके साथ में चांट करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले जाएंगे, जो उससे बड़े जो स्टूडेंट हैं वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी की जो क्लासेस है उसमें जाते हैं, और जो सीनियर मंक, जो बड़े बुजुर्ग मंक हैं, वो सारे यहाँ पर आके जैसे रिचुअल्स करते हैं, चांटिंग करते हैं, और जो दूसरे जो छोटे मंक हैं उनको सिखाते हैं। तो इस तरह से रूटीन चले जाते हैं हर दिन। जैसे मॉर्निंग 8 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता है, दिन को 12 बजे लंच हो जाता है, और शाम को 6-7 बजे डिनर हो जाता है। तो ऐसा चलते रहते हैं। Okay, thank you so much for your time. He told us if we spin it and wish something, it will be fulfilled. So I had to give it a try. Every parts of the monastery speak of history. They bear scars, marks of the times passed by. I feel like I was walking in a different world. Like all the good things in life, we have to end somewhere. And unfortunately, this was the time. In this journey of a week, I have learned so much. I have dived deep into their culture, lived their way of life, experienced things that I could have never imagined. It was an amazing journey, one that I will remember forever.